हमारे बीच में एक बार जोरदार खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। भारत माता की, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। The star campaigner of the Bharatiya Janata Party has been chosen for one of the most prestigious political battles of the season. While the temperatures may be dropping in the capital, but the fight for Delhi is surely heating up. जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। The BJP came out as the single largest party in assembly elections held 1 year ago. But 5 short of the magic number of 36, the ruling party at the centre could never stake claim in the capital. The Congress got a measly 8 seats. The spoiler for the BJP was this new entrant, Arvind Kejriwal. While the Prime Minister kickstarts his campaign now, Arvind Kejriwal has been on the field for several months now. At one of these public meetings at a constituency in Delhi, the focus remains Sadak, Pani, Bijli, but also health and education. Arvind Kejriwal hopeful that they will be able to reach out to the voters. भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते, चलता है ना। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। Realizing who the main contenders are, the Prime Minister is choosing to attack the Aam Aadmi Party and his ill-timed 49-day government would ditch the people despite the unprecedented faith they had shown in the newcomer. This is apparent from the radio campaign being done by the Bharatiya Janata Party. जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहे कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। Smooth governance by having the same government in the state and at the centre. Development, stability. These are the main themes of the BJP campaign. And also their winning card, the Modi charisma, which has had the city-based aspiration class turn to the BJP. उनका अभिनंदन करें श्री सतीश उपाध्याय जी। हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। इसी विश्वास के साथ दिल्ली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। That's perhaps why the recently elected chief ministers have been pulled in for this mega rally to stress on the point of pro-BJP sweep in the nation's recent politics and to suggest that wherever there is a vote for development, the natural choice is the Bharatiya Janata Party. मुंबई बदलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप दिल्ली को बदलना चाहते हो? अरे जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो तो बदलेंगे ही, जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो विकास पाएंगे ही। क्या आप विकास पाना चाहते हो? अगर आप विकास पाना चाहते हो तो मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार दीजिए और देखिए चेहरा बदलेगा। आज झारखंड जैसे प्रदेश जो 14 वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता के कारण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ झारखंड जो विकास का बाट जोड़ रहा था, आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब झारखंड विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। Other celebrity campaigners that have been pulled in to pull the numbers for the BJP include Hema Malini, Shatrughan Sinha, Manoj Tiwari, along with their A-list of top leadership. ऐसे मिलने से हो जाएगा दिल्ली में नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वही पार्टी दिल्ली की सरकार भी चला रही है। 6 महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन है। 6 महीने पहले देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके बीजेपी को वोट दिया था, बड़ी आस लगा के बीजेपी को वोट दिया था, पर इन 6 महीनों के अंदर एक एक करके जितने वादे करे थे बीजेपी ने, एक एक करके सारे वादे तोड़ती गई। अब तो लोगों ने कहना चालू कर दिया ये बीजेपी की सरकार यू-टर्न सरकार है। In the Aam Aadmi Party camp, the star power remains confined to Arvind Kejriwal. The party is trying to reinvent itself from last year's debacle of quitting from the government on a random issue. The mistake that Aam Aadmi Party is very well aware of and would not want to repeat. I think, of course, there is no denying the fact that the people of Delhi did not want us to resign. The people of Delhi wanted us to stay on. The people of Delhi wanted us to stay on and fulfill many of the promises. But that is precisely the reason why the people of Delhi want us back. They want us back because they saw that here was a government that actually fulfilled its promises. Here was a government which actually brought about a reduction in their monthly expenses, be it water, be it electricity, be it even the regular corruption charges that everyone is used to paying. So we did make a difference. And that is precisely the reason why people want us back. So our campaign strategy is going to be threefold. First of all, we are going to talk about the promises we actually fulfilled. The second thing that we have, which no other party does, is a vision for Delhi, a blueprint for the people of Delhi, for the women of Delhi, how we are going to provide security to them, for the youth of Delhi, how we are going to provide them education, how we are going to provide them jobs, a blueprint for unauthorized colonies, for slums, for all sections of people who live in Delhi. That is what we have. Third, what we have, what the BJP clearly doesn't, is any leadership. The BJP state unit is not just full of infighting. The fact that they are projecting the Prime Minister of the country, who can never be the Chief Minister, as their face, goes to show that they themselves are admitting that they don't have leadership. It's a do-or-die position for them. It is a do-or-die position because if you remember, they did not contest Haryana elections, obviously knowing that they will not be succeeding, and even if one loss would have affected this Delhi, therefore they shut these other assembly elections. They are concentrating on Delhi. Now the test case is February. Arvind Kejriwal as well is attempting an image makeover. He's trying to appear as somebody who can now govern and not only protest. Somebody who will not only be a destructionist street fighter, but instead be a politically savvy leader.
The question really is, will this image being portrayed by Kejriwal work for the Aam Aadmi Party and give them a majority in this Delhi elections? Not too long ago, this was Kejriwal's slogan. कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ. But Kejriwal redux, lessons learnt, talks a more politically viable language now. भाई साहब बनिया हूँ मैं, धंधा अच्छी तरह समझता हूँ. आजाद दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये वैट डिपार्टमेंट का रेड एंड एक्सटॉर्शन रैकेट जो है ये बंद किया जाएगा. Of course, yes, business community had a major chunk in the electoral politics, and similarly that is why, having been in the Indian Revenue Service, Mr. Arvind Kejriwal found out that business community is to be tapped, and he very effectively tapping, not only through social media, through this Indian Revenue Service circuit also he is making lot of dent, because he is in the losing spree. Therefore he has to induct lot of names which he dropped. One among them is Bania, because he wanted to attract the Chandni Chowk area where he miserably failed. Therefore, if you remember, even Ashutosh was mentioning Ashutosh Gupta. Therefore, the Gupta name is synonymous with the Aam Aadmi Party. They want to project themselves as a traders party. The other core constituency for Kejriwal is the rural and slum areas of the capital. He has joined hands with NGOs working in rural areas to tap into that vote bank, considered to be the BJP's Achilles heel. Unlike the BJP, Kejriwal's campaign style has more to do with personal gatherings than mega rallies. He has held over 50 Jan Sabhas last month alone. But what has been nagging Kejriwal is his erratic track record.